नमस्कार गाइस। आज हम करेंगे मेंसुरेशन पार्ट 2। मेंसुरेशन पार्ट 1 में हमने सीखा था क्यूब और क्यूबाइट के फॉर्मूलेज कैसे डिराइव होते हैं इजी वे से। अब हम सीखेंगे कुछ और फिगर्स मेंसुरेशन पार्ट 2 में, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सर्कल क्या होता है। सी दिस इज द सर्कल। सर्कल इज व्हाट? इट्स अ राउंड फिगर whose distance from the center is fixed in all the directions. Simple definition है. Circle is a what? A round figure whose distance from the center is fixed in all the directions, and this fixed distance is called your what? Radius. What is this? This is the radius. So radius, and in mathematics we denote it by r. And if you take the double of this radius, it become what? It become diameter. Means what is diameter? Diameter is the double of the radius. This is diameter. Is double of radius, and in mathematics we denote it by d. Or we also called this diameter is the longest chord of the circle. ये हम ज्योमेट्रिकल पार्ट में सीखेंगे। अभी हम मेंसुरेशन पार्ट में इसका सर्कमफ्रेंस और एरिया के ऊपर जोर देंगे। तो व्हाट इज दिस सर्कमफ्रेंस? सर्कमफ्रेंस मैंने पहले भी बताया था। सर्कमफ्रेंस मैंने आपको पहले भी बताया था। पेरीमीटर इन केस ऑफ क्लोज साइडेड फिगर्स मैंने आपको बताया था सम ऑफ ऑल द साइड्स इज कॉल्ड व्हाट? पेरीमीटर। हियर आल्सो सेम। एक सर्कल है आप लोगों के पास। ये सर्कल किसी चीज का बना होगा, किसी पाइप्स का बना होगा, किसी रॉड का बना होगा। सो दैट उस रॉड का जो टोटल लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड द पेरीमीटर। सो दिस सर्कमफ्रेंस, सो इट इज व्हाट? 2 पाई r here. And what is area? Area of the circle is just this pi r square. So this is all about the circle. नेक्स्ट जो आपके पास फिगर आती है दैट इज योर सिलेंडर। व्हाट इज द सिलेंडर? इट इज अ 3D shape. If you are having this, let's suppose this is what? This is your circle, and you add height to it, then it called what? This is what? This is your cylindrical shape. तो सिलेंड्रिकल शेप में जैसे ये आप लोगों के पास बॉक्स है, दिस इज अ बॉक्स। इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है? ये सर्कुलर बेस है आपके पास, टॉप भी सर्कुलर है, बेस भी सर्कुलर है आप लोगों के पास। तो आप लोगों को इसका सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। कर्व सरफेस एरिया मींस ये वाला सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपली आप क्या करिए, ये जो आपके पास 2 पाई r जो आप लोगों के पास सर्कमफ्रेंस है सर्कल की, उसमें हाइट सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज योर CSA. दिस CSA इज व्हाट? 2 pi r and this h. Now the total surface area, this total surface area is what? इस वाले 2 pi r h जो बाहर वाला पोर्शन है, इसमें आपके पास दो सर्कल है आप लोगों के पास, दोनों का एरिया ऐड कर दीजिए, बिकॉज टोटल वी आर टेकिंग। सो 2 pi r h plus 2 pi r square. I am taking the two circles area. So area of one circle is what? Pi r square. Take this 2 pi r common. Inside you have h plus r. So this is the total surface area of the cylinder. Now volume. Volume का मतलब कि सिलेंडर में कोई कितनी चीज आ सकती है। How? What is the capacity of this cylinder? So this volume is what? Volume मैंने आपको बताया this is a 3D shape. तो area of the circle is what? This is your pi r square and height you multiply to it. This is the volume. Volume of सिलेंडर। एक और फिगर है उसको जल्दी से कर लेते हैं। दैट इज योर व्हाट? कोन। कोन होता क्या है? अगर आपके पास जैसे आपने यहां पे हाइट ऐड करी थी, आपने आपकी क्या किया? राइट सर्कुलर, राइट हैड आपने, दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर राइट circular cylinder. Now if in the circle you just add a slant height, slant height means तिरछी ऊंचाई अगर उसमें आप ऐड कर देते हो, then it is called your cone. इसको बोलते हैं slant height. This is your L. This is not height H. This is height. This is what? This is height and this is radius. This is called a slant height.
what? Slant height. And it is denoted by L. And what is its formula? Simply, this is what Pythagoras you can apply here. This is your L. This is the hypotenuse. So L square is equal to h square plus r square. So slant height. Now here we are using what? We are using this curved surface area. सिंपली आप लोगों के पास आपने कोन देखा होगा, जो आइसक्रीम वाला कोन है, तो आइसक्रीम के कोन में आप सिर्फ ये स्लैंट हाइट L ऐड कर दीजिए, और जो आपके पास circumference है, that is a half circle here. So that's why it is not 2 pi r, it is just pi r L. L से multiply कर दिया आप लोगों ने circumference को, half circumference को. Total surface area is what? Total surface area is what? This pi r L में curved surface area में पूरा सर्कल का एरिया ऐड कर दीजिए, because we need this. So it is your pi r square. A common what? Pi r is common. It is L plus r is inside. This is the total surface area of what? Cone. Now what is its volume? Volume is just, मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, that is what? आपके पास सिंपल क्या है यहाँ पे? This is your what? Pi r square into h. Just you make it 1/3, because 1/3 of the cylinder is the volume of what? Cone. This is all about cylinder and cone. कल हम सफेयर और हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, वो लास्ट टॉपिक होगा, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे. आप तब तक के लिए रिवाइज करिए. कंटेंट अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें. अच्छे से रहें. जय हिंद.